Producer Amit Jani has announced that he is gearing up to make Sambhal Files, a movie based on the devastating Sambhal riots of the 1970s, which left a deep mark on the region and its people. Amit Jani said that during the Sambhal riots in the 70s, people were forcibly driven out by slogans and terror was unleashed across the city, with many attacks aimed at changing the demography. He added that the upcoming film will seek to reveal the untold truth of the Sambhal riots of 1973, 1976 and 1978. की पीठाधीश्वर श्री प्रमोद कृष्णम जी के दर्शन के लिए आता रहता हूं। कल की धाम की जब से प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है तब से और लगातार आना जाना हुआ है, लेकिन आज मुझे देख के थोड़ा अजीब लगा। जब डेमोग्राफी चेंज हो गई, 15% हिंदू बचा है, तो ये संभल तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? संभल तीर्थ बन जाएगा, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वो कह रहे हैं अभी भी कि हम कह के जाएंगे अपने बच्चों को कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, और संभल में तो 15% रह गए। तो तीर्थ पे मुझे लगता नहीं कोई बटालियन, कोई डेवलपमेंट तो है नहीं ऐसा जो होना चाहिए था। कम से कम जब काशी विश्वनाथ के मंदिर की भारी सुरक्षा है, वैष्णो देवी की भारी सुरक्षा है, हर मंदिर की, राम मंदिर की भारी सुरक्षा है, वृंदावन को कवर किया हुआ है चारों तरफ से, जो है जन्मभूमि को, वो तो ये तो जन्मभूमि ही है, भगवान की जन्मभूमि है, तो यहाँ तो मुझे लगता है बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। तो मुझे तो इनका भरोसा नहीं है। जो लोग इर्द गिर्द हैं, जिनकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई, एक व्यक्ति को कुएं में फेंका तराजू के साथ 1978 में, तो जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो 309 चाकू थे। 309 से थोड़ी मरा होगा, 2 से ही मरा होगा। बाकी तो इसलिए मारे गए ताकि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो तो दहशत फैले और बाकी लोग भागे यहाँ से, जैसे कश्मीर से भागे थे, ऐसे संभल से भागे लोग, पलायन कर गए। तो संभल में अगर इतना बड़ा धाम बन रहा है, तीर्थ बन रहा है, तो मेरी चिंता, संभल के भविष्य की चिंता जो है, कल की धाम की भी चिंता है। We have Adib joining us on the broadcast with more details. Adib, after Udaipur Files, now looks like Sambhal Files is in the making. Well, definitely, Swati, see, filmmaker Amit Jani, he was in Sambhal, and while he was visiting Sambhal, he said that there's a need to create Sambhal Files after the Udaipur Files. His movie, Udaipur Files, was in a midst of controversy, but now he's saying that he's going to he's going to make a film on Sambhal Files after the Sambhal report has been, there are some sections of the Sambhal report that has been made public, which shows that how the Hindu population has been on a decline, on a decrease in Sambhal area. There were efforts made to change the demography in Sambhal, and after the violence that erupted in Sambhal last year in November, Chief Minister Yogi Adityanath constituted a 3-member judicial committee which started their inquiry, and after around 6 to 7 months of inquiry, they submitted their report to Chief Minister Yogi Adityanath. So the filmmaker Amit Jani says that this movie will be based upon the upcoming the facts that has been produced in those particular judicial reports constituted by which was constituted by Chief Minister Yogi Adityanath. And he also calls for the security in the Kalki Dham. He says that heavy security is there for Kashi Vishwanath Mandir. He says heavy security is there for Ram Mandir. Similarly, heavy security should be for the Kalki Dham. So Amit Jani has confirmed that he's going to make a movie, and also calls for the heavy security in Kalki Dham in Sambhal. Swati. All right, Adib, stay on with us. Let's listen to the reactions coming in. Now, the announcement has undoubtedly sparked a political storm. Samajwadi Party's Amit